So this is a first question. If a number is multiplied by 25% of itself, it gives a number which is 200% more than the number is. हिंदी में अगर बात करें तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर किसी संख्या को उसके 25% से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो रिज़ल्ट होगा वो उस नंबर से 200% ज़्यादा होगा। तो उस नंबर की वैल्यू क्या है, वो नंबर क्या है, ये हमें पता लगाना है, ये हमें फाइंड करना है। So I am going to show you this by two method. Method 1 and here I will show you it by method 2. दो मेथड से मैं आपको ये बताऊंगा। सो मेथड 1 से अगर देखा जाए, सो लेट सॉल्व इट बाय द बेसिक मेथड बाय एज्यूमिंग x। तो अगर नंबर होगा हमारा x, नंबर अगर हम x मान लेते हैं, तो इफ़ ए नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 25% ऑफ इट सेल्फ, सो नंबर x इज़ मल्टीप्लाइड बाय 25% इज़, we already know that 25% is 1/4. So number is multiplied by 25% of itself, that is 1/4x. Now it would give the number which is 200% more than the number. So if the number is x, so 200% will be 2x. Now let's solve it. This is x square upon 4, 3x. So from here we will find the value of x, that is x square is equals to 12x, and we will cancel it. We will get x is equals to 12. So the number is 12. Now by second method, this is the shortcut method. Let's convert this 25% to the fraction. So 25% is written as 1/4, 1/4, 1/4 होता है 25%. So the number is, let's assume the number is 4 and its 25% will be 1. So number is 4 and this is 25%. So the first step will be, here it is given that if a number is multiplied with 25% of itself, so 4 is the number and it is multiplied by 25%, so 25% is 1. So 4 is 2 into 1 is equal, it gives a number which is 200% more than the number. So 200% more than the number, it means so 4 is equals to 12. Now this is second question. The question is given as if 16 combination 2/3% of a number is added with itself, then result becomes 2849. Find original number. So ये क्वेश्चन बहुत आसान है, हमें केवल सिर्फ 16 कॉम्बिनेशन 2/3% की परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हमें पता है 16 कॉम्बिनेशन 2/3 इज रिटन एज 16.66% and it is 1/6 in the term of fraction, right? ये हमने इनिशियल लेक्चर में डिस्कस किया है, फर्स्ट लेक्चर में, कि कुछ कन्वर्जेंस हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन, जिन्हें हमें याद होना चाहिए, हमारे टिप्स पे होना चाहिए। सो दिस इज़ 1/6। नाउ इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ये देखना होता है कि 1/6 जो है, इसमें 6 शो करता है ओरिजिनल नंबर को, और इसके ऊपर हम प्रोसीड करते हैं, इस 6 के ऊपर हम प्रोसीड करते हैं फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद। नाउ क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि इफ़ 16 combination 2/3% of a number is added with itself, so 6 is the number, and if 6 is the number and if it's 16 combination 2/3%, so 6 का 16 combination 2/3 जो होगा वो 1 होगा। So 6 + 1 that is 7 की वैल्यू हमें दी हुई है 2849. Okay, so find the original number. So original number is 6,
तो 6 की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है. 6 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2849 अपॉन 7. 7 4 जा 28, 407. Now we'll multiply with, so 24 and 42, 2442. So this is the answer. Now this is the third question. In this question it is given that if 16 combination 2 by 3% of a number is subtracted from itself, then result becomes 5880. Find original number. So जैसा कि हमने सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस किया है, उस क्वेश्चन में हम ऐड कर रहे थे, एंड इन दिस क्वेश्चन इट इज़ गोइंग टू बी सब्सट्रैक्टेड. इस क्वेश्चन में हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो अगेन द सेम प्रोसीजर. 16 कॉम्बिनेशन 2 by 3% को हमें लिखना होगा इन द टर्म ऑफ फ्रैक्शन, that is 1 by 6. So if the original number will be 6, right, original number will be 6, so there will be decrement of 1 unit on every 6 unit, right? So after decrement the new number will be 6 minus 1, that is 5, right? This is new. So as per question we will see here that if 16 combination 2 by 3 of a number is subtracted from itself, so 6 minus 1, that is 5. So 5 की वैल्यू हमें दी हुई है, 5 is 5880. Then find the original number. Original number is 6. So 6 की वैल्यू निकालने के लिए हमें इजीली हम ऐसे इसे निकाल सकते हैं. So this is question number 4th. In this question it is given if 25% of a number is subtracted from second number, then second number reduces to it 5/6. What is the ratio of first number to second number? So it is very easy question, बहुत आसान है ये. फर्स्ट नंबर हम अज्यूम कर लेते हैं A है और सेकेंड नंबर B है. 2 नंबर हो गए हमारे. अब कह रहा है कि 25% ऑफ अ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेकेंड नंबर. तो 25% एक नंबर का, 25% मान लेते हैं कि A को हम फर्स्ट मानते हैं और सेकेंड मानते हैं हम B को, ठीक है. तो 25% ऑफ अ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेकेंड नंबर. सो B माइनस इसका 25%, तो 25% की वैल्यू हमें पता है 1/4 होती है. सो B माइनस A/4, राइट. अब इसकी वैल्यू हमें पता है कि देन सेकेंड नंबर रिड्यूसेस टू इट 5/6. सो अब ये अगर सब्सट्रैक्शन होता है तो एज पर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू हो जाती है 5/6 ऑफ B. सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर, डेट इज हमें निकालना है A बाई B की वैल्यू. सो ईजी है ये. लेट्स ट्रांसफर इट टू लेफ्ट साइड. सो B minus 5/6B is equals to A/4. Now on solving this बहुत आसान है ये. B/6 is equals to A/4 and again A/B is going to be 4/6. So this is 2/3. So our answer is 2/3. So next question is income of Rinku is 157.14% more than Manish. Then find the ratio of 1/2 year income of Rinku and 2 year income of Manish. क्वेश्चन में कह रहा है कि रिंकू का इनकम 157.14% ज़्यादा है मनीष के इनकम से. तो रेशियो हमें निकालना है रिंकू के आधे साल के इनकम का और मनीष के 2 साल के इनकम का. तो बहुत आसान है. 157.14% को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है. आवर मेन टास्क इज़ टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन दिस परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन. सो 157.14% को हम easily by practice you will get over this. हम 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं. 150% plus 7.14%. Now 150% again it is the combination of 100% and 50%. So 100% is written as 1, 50% is written as 1/2 and 7.14% is written as 1/14, right? So on solving this we will get
3/2 plus 1/14, that is 11/7. So this is the income fraction of Rinku and Manish. So our question is not this. We will have to go furthermore. So this is the basic income of Rinku and Manish. Now what we'll have to find? We will have to find half year income of Rinku. So माफ़ कीजिएगा, 11/7 नहीं होगा, ये 7 + 11 is going to be 18/7. So this is the रिंकू और मनीष का रेशियो होगा. एंड एज पर आवर क्वेश्चन, हाफ ईयर इनकम हमें रिंकू का लेना है और 2 साल का इनकम हमें मनीष का लेना है. तो रिंकू का हाफ ईयर दैट इज़ 18/2, तो 9 हो जाएगा, और 2 साल इनकम मनीष का ये हो जाएगा 7 × 2 दैट इज़ 14. सो आवर आंसर विल बी 9/14.